Welcome, dear students. This is our fifth lecture on special theory of relativity. And in today's lecture, we will talk about the relativistic addition of velocities. So let's start. Imagine हमारे पास एक object है. The object is P. और उसकी मोशन हम दो फ्रेम्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं. One frame is frame S, which is stationary, and another frame is S prime, and that is moving, and it is moving with a velocity V with respect to our stationary frame S. So V is the velocity of moving frame S prime with respect to frame S, and the frame is moving along x-axis. So we have got an object P. तो अगर हम इसकी position देखें as per frame S, we get x. और अगर हम इसी object की position देखें as per frame S prime, we get x prime. The object can be in motion also. तो अगर हम इसी object की velocity along x-axis measure करें in frame S, तो we get suppose ux. और अगर हम इसी object की velocity measure करें in frame S prime, we get ux prime for the sake of argument. Now we have to see what is relation between ux prime and ux. इन दोनों को हम कैसे relate कर सकते हैं? So there are three velocities involved. One is ux, the velocity of body as per frame S. Another velocity is ux. This is velocity of the same body or object as per frame S prime. And then there is another velocity involved in the problem, that is velocity V. This V is velocity of moving frame S prime with respect to the stationary frame S. So that is the problem. So we have two frames, frame S, which measures the position X, Y, Z, T. We don't need Y, we don't need Z coordinate. So it measures the position of object as X, and it measures time as T. And we have got another coordinate system S prime, which measures position of point P as X prime, Y prime, Z prime. We don't need Y coordinate, Z coordinate. We only need the X position, so that is X prime, and the time measured in S prime is T prime. And the system S prime moves with a velocity V along the positive x-axis with respect to the stationary frame S. तो जो पॉइंट P है, इसकी velocity अगर हम stationary frame में measure करें, we get ux. और अगर हम moving frame में measure करें, we get ux prime. So obviously velocity is the rate of change of position with respect to time. So ux will be dx by dt. Since ux is the velocity of object in frame S, तो हम position भी frame S की use करेंगे, that is x, और हम इसमें time भी इसमें use करेंगे measured in frame S. X is the position in frame S and T is the time measured in frame S. तो इसी तरह हम ux prime के लिए expression लिखेंगे, that will be again rate of change of position with respect to time, but ux prime is the speed or velocity of the object in frame S prime. तो इसमें जो हम position use करेंगे, that will be again position measured in S prime, और इसमें जो हम time में use करेंगे, that will be again the time measured in frame S prime. So equation 1 deals wholly and solely with frame S, and equation 2 deals with wholly and solely with frame S prime.
Now let us use Lorentz transformation for x coordinate. यानी कि we know how x prime is related with x. That we already know. That is given by the Lorentz transformation. X prime equals x minus vt divided by under root 1 minus v square by c square. अच्छा, ये जो इसमें 1 by under root 1 minus v square by c square है, we put that equal to gamma, so we will get simply gamma times x minus vt. So 1 by under root 1 minus v square by c square, जिसको हम gamma के बराबर रखते हैं for the sake of brevity, simplicity, तो we get x prime as gamma times x minus vt. Let us differentiate this. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे dx प्राइम मिलेगा, गामा इज अ कांस्टेंट, x के साथ डिफरेंशिएशन होगी dx, v इज अ कांस्टेंट, रिमेंबर v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच फ्रेम s प्राइम इज मूविंग, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, टाइम की डिफरेंशिएशन होगी, सो वी विल गेट v into dt. So we will get dx prime is equal to gamma times dx minus v dt. We will keep it as equation number 3. इसी तरह जो फ्रेम s है, it will measure time as t, और जो फ्रेम s प्राइम है, it will measure time as t prime. और इन दोनों की भी हम आपस में रिलेशन देखेंगे, that is the Lorentz transformation for time. T prime will be given by t minus v by c square times x divided by under root 1 minus v square by c square. तो ये जो 1 by under root 1 minus v square by c square है, we will again substitute gamma for it. So we will get t prime is equal to gamma times t minus v by c square times x. इसको भी हम differentiate करेंगे, तो t prime will become dt prime, gamma will remain same, t will become dt, v is a constant, c square is a constant, and x will become dx. तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, we will get dt prime equals gamma dt minus v by c square dx. मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इकट्ठे लिखूंगा. सो these are our equation number 3 and 4. Let us divide equation 3 by equation 4. So dx prime, that is gamma times dx minus v dt, और dt prime denominator में होगा, so that is gamma times dt minus v by c square dx. Gamma and gamma will go, and we will have the rest. So this is dx prime by dt prime. तो ये हमें मिलती है. Let us do one thing. Let us divide numerator as well as denominator by dt, but only on the right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह हम dt से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे dx था, इसको भी हम dt डिवाइड करेंगे. देन इट वाज माइनस v dt, इसको भी हम dt डिवाइड करेंगे. देन डिनोमिनेटर में और यहाँ पे dx है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे dt. तो ऑब्वियसली dt एंड dt विल गो, और यहाँ पर भी dt एंड dt विल गो. तो वी विल गेट दिस इक्वेशन dx by dt माइनस v न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस v by c स्क्वायर इंटू dx by dt. अच्छा, यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यूज करना चाहूंगा. व्हाट इज dx by dt? इसमें पोजीशन भी फ्रेम s की है x, और इसमें टाइम भी फ्रेम s का यूज हुआ है. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन भी फ्रेम s की है और टाइम भी फ्रेम s का यूज हुआ है. तो
Equation number 1 says that it is the velocity of object according to frame S. This is also velocity of object as measured in frame S. And what about this dx prime by dt prime? इसमें पोजीशन भी फ्रेम एस प्राइम का यूज हुआ है और टाइम भी फ्रेम एस प्राइम का यूज हुआ है. So this is the rate of change of position of the object with respect to time, but in frame S prime. So this is velocity of the object in frame S prime. तो जब हम इसमें equation number 1 और equation number 2 substitute करेंगे, we will get equation number 5. So we get equation number 5, and that is the required equation because we needed how ux prime and ux can be related, and we have got equation number 5 which relates them. अच्छा, अब अगर मोशन होली एंड सोली एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रही हो तो फिर हमें ये सबस्क्रिप्ट x रखने की जरूरत नहीं है. We can drop those subscripts. We can only write u because we already know that there is only one direction जिसके along motion हो रही है. तो we will get u prime equals u minus v divided by 1 minus uv by c square. What is u? U is velocity of the object with respect to the stationary frame S. What is u prime? U prime is velocity of the same object with respect to the moving frame S prime. और इसमें जो velocity v use हुई है, what is this? It is the velocity of moving frame S prime with respect to the stationary frame S. तो equation number 6 में there are 3 velocities involved. तो keep in mind कि कौन सी velocity क्या है, right? अच्छा, इक्वेशन नंबर 6 का हम इनवर्स रिलेशन भी देख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 गिव्स मी u प्राइम इन टर्म्स ऑफ u, कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रेम s में दी गई हो, फ्रेम s प्राइम की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s दी गई हो, यानी u और v दी गई हो और हमें u प्राइम निकालना हो. व्हाट इफ u प्राइम इज गिवन, v is given और हमें u के लिए एक्सप्रेशन निकालनी हो, तो या तो हम इस इक्वेशन को u के लिए सॉल्व करेंगे, दैट विल बी a tedious task. तो आई विल गिव यू एन इजी वे कि हम ऐसा करेंगे कि जहां कहीं पे u है उसको रिप्लेस करो विद u प्राइम. तो यहां पर भी u है उसको रिप्लेस करो विद u प्राइम, और जहां पे u प्राइम है उसको रिप्लेस करो विद u. बट हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वी आर इंटरचेंजिंग फ्रेम s एंड s प्राइम. फ्रेम s इज स्टेशनरी एंड फ्रेम s प्राइम is moving with the velocity v. तो अगर हम फ्रेम s प्राइम के व्यू पॉइंट से देखें, अगर हम फ्रेम s प्राइम को स्टेशनरी बनाना चाहें तो हमको इस पे एक वेलोसिटी सुपर इंपोज करनी है माइनस v. इसकी वेलोसिटी थी v, इस पे हमने सुपर इंपोज वेलोसिटी करनी है माइनस v, सो दैट दिस बिकम्स 0. नाउ s प्राइम इज स्टेशनरी. लेकिन हमने फ्रेम s प्राइम पे जो वेलोसिटी सुपर इंपोज की माइनस v, यही वेलोसिटी हमने फ्रेम s पर भी सुपर इंपोज करनी है. फ्रेम s की वेलोसिटी 0 थी तो इसको वेलोसिटी मिलेगी माइनस v. माइनस का मतलब है कि फॉर फ्रेम s प्राइम द फ्रेम s इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस विद द स्पीड v. So
as far s prime is concerned, frame s has velocity minus v. So अगर हम इक्वेशन 6 में फ्रेम s और s प्राइम इंटरचेंज करना चाहें तो v की जगह हमने लिखना है माइनस v। ये हम न्यूमरेटर में भी करेंगे और ये हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन सी के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें u प्राइम की जगह u मिलेगा, राइट हैंड साइड पे फिर u प्राइम मिलेगा, देन इट इज माइनस, देन देयर इज अनदर माइनस, सो दैट मीन्स प्लस। और इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 माइनस, then there is minus v, that will make it plus, so 1 plus और u की जगह u prime v by c square, that is the inverse relation will be equation number 7। u prime की जगह u, और जहां पे u था वहां पे u prime, और जहां पे v था वहां पे minus v, so we get equation number 7। So we have got equation 6 which gives u prime in terms of u and v, and we have got equation number 7 which gives u in terms of u prime and v. So we are done with the relativistic addition of velocities. Now the question is how to use them. How to use equation 6 and equation 7. देखिए जो भी प्रॉब्लम इस पे होगी, देयर विल बी 3 वेलोसिटीज इन्वॉल्व्ड। 2 वेलोसिटीज या हम 2 स्पीड्स का वैल्यू कहें, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, और तीसरी वेलोसिटी या स्पीड का वैल्यू निकालना होगा। सो द 3 वेलोसिटीज आर u, एक तो है u, दूसरी है v और तीसरी है u प्राइम। सो एक तो हम यहां पे ऐसा करेंगे, वी विल मेक फ्रेम s, इसको हम हमेशा अर्थ बाउंड फ्रेम मानेंगे। दिस विल बी अर्थ बाउंड फ्रेम and it will be always stationary. So this is frame s and it is always stationary. It is always stationary. और क्वेश्चन में हमेशा 2 पार्टिकल्स होंगे। तो सपोजिंग दिस इज 1 पार्टिकल एंड दिस इज अनदर पार्टिकल, तो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन 2 ऑब्जेक्ट्स में से दिस इज 1 ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। इनमें से एक पार्टिकल को ऑब्जेक्ट मान लो, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज आवर सेकंड पार्टिकल। तो जो पहला पार्टिकल है इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, वी विल ट्रीट इट एज ऑब्जेक्ट P। देन इट्स वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S, सो इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S, दैट विल बी ऑब्वियसली U। और जो दूसरा पार्टिकल है इसके साथ हम फ्रेम अटैच कर लेंगे S प्राइम। तो इट इज अप टू यू कि 2 में से कौन सा पार्टिकल आपको कन्वीनियंट लगे कि जिसको आप फ्रेम यानी मूविंग फ्रेम S प्राइम उसके साथ अटैच कर लें। दिस इज मूविंग फ्रेम S, सो सेकंड पार्टिकल। तो जो इस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, नाउ इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल with respect to frame S, that will be V, because जो दूसरा पार्टिकल है इसको अब हमने मूविंग फ्रेम S प्राइम बना लिया है। तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी होगी V। अच्छा, ऑब्जेक्ट की एक और वेलोसिटी भी तो है ना, U प्राइम।
And what is u prime? U prime is the velocity of object with respect to moving frame. That means with respect to the second particle. So u prime will be velocity of object with respect to the second particle. और हमारा जो second particle है वो अब frame s prime बन गया है. तो this is how you will designate the three velocities. एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज होंगी, वन u with respect to frame s, another u prime with respect to s prime, that is this second particle. और जो second particle की velocity होगी with respect to our stationary frame, that will be v. So that is how you will designate the three velocities. Now let us solve a few numerical problems on the relativistic addition of velocities. So the problem says there is a physicist who observes a radioactive atom moving with a speed of 0.5 c. So we have got one velocity as 0.5 c. The atom then emits a beta particle which has a velocity of 0.90 times c relative to the atom along its direction of motion. So we have to evaluate what is the velocity of the beta particle as observed by the physicist. So let us make the physicist as the stationary frame. So this is our physicist और ये होगा हमारा stationary frame, earthbound frame, and it will be at rest. So it observes a radioactive atom. हमारे पास दो particle हैं इसमें. Number one is the radioactive atom. Radioactive atom. तो इसकी भी स्पीड दी गई है, that is 0.50 times c. And then the atom emits an alpha particle. So alpha particle को हम alpha particle से ही denote कर लें along its direction. So along the same direction, and it has velocity 0.90 times c. So this is our alpha particle. तो रिमेंबर क्वेश्चन में तीन वेलोसिटीज हैं, एक तो है u, दूसरी है u प्राइम और तीसरी है v. u और u प्राइम एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज होती हैं, वन विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम s एंड वन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम s प्राइम. और ये जो v है that is the velocity of moving frame with respect to stationary frame. तो चूंकि अल्फा पार्टिकल की एक वेलोसिटी दी गई है तो दूसरी निकालनी है, so that means अल्फा पार्टिकल को ही हमने ऑब्जेक्ट मानना है क्योंकि ऑब्जेक्ट की ही दो वेलोसिटीज होती हैं. So this is our object. तो that means कि जो रेडियो एक्टिव एटम है इसके साथ हमने फ्रेम s प्राइम अटैच करना है. And physicist observes a radioactive atom moving with a speed of 0.50 c. So this speed is speed of radioactive atom with respect to physicist, या अब हम कहेंगे कि this is the speed of s prime with respect to s. So this speed is v. So v equals 0.50 times c. The atom then emits a beta particle has a velocity of 0.90 c. अब हमें देखना है कि ये जो बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी है 0.90 times c, is it with respect to atom or is it with respect to physicist? Relative to atom, so this is relative to atom. So this is relative to atom, that means the moving frame, so that means this velocity is u prime. This is u prime. And what we have to determine? We have to determine what is the velocity of the beta particle as observed by the physicist. So what is the velocity of this object as per the frame s? So that means we have to determine u.
So we know what V is. We know what U prime is. We have to determine U. So we have to use the inverse relation, that is U is equal to U prime plus V divided by 1 plus U prime V by C square. Now let us substitute the values. So we will get U is equal to U prime, that is 0.90 C plus V, that is 0.50 C divided by 1 plus U prime, that is 0.90 C into V, that is 0.50 C and divided by C square. अब यहाँ पे देखें C, यहाँ पर भी C है, वो बनेगा C स्क्वायर, वो इस C स्क्वायर को कैंसिल करेगा। न्यूमरेटर में 0.90 उसको ऐड करना है 0.50, दिस विल बिकम 1.40 C डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे 0.90 इसको मल्टीप्लाई करना है 0.50, वी विल गेट 0.45। सो न्यूमरेटर में है 1.40 C डिवाइड और 1 इसको ऐड करना है तो वी विल गेट 1.45। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, वी हैव टू डिवाइड 1.40 बाय 1.45, वी गेट 0.9651 and many other digits times C. Okay, तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो इनपुट डेटा है उसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.50, दिस 0 is not significant, 5 is significant, this 0 is again significant, so there are 2 significant digits and same is the case here. तो हमें इस आंसर में भी 2 ही significant digits रखने हैं, तो that means we have to retain 9, we have to retain 6 and we have to drop 5. तो 6 को हमने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका यह है कि 6 के बाद वाला डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो तो इंक्रीमेंट 1 करना है, तो ये 7 बनता, और 6 के बाद जो डिजिट है अगर ये लेस देन 5 होता तो 6 ऐसे ही रहता। नाउ जिसको हमने ड्रॉप करना है वो ना तो 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, इट इज वेरी मच इटसेल्फ 5। तो इस केस में रूल ये है कि अगर हमने जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो खुद 5 है तो उससे पहले आने वाले डिजिट को देखें, अगर वो ऑड है तो इंक्रीमेंट कर लें बाय 1, और अगर इवन है तो ऐसे ही रखें। सिंस 6 इज इवन, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, सो वी विल गेट 0.96 टाइम्स C. So that is the velocity of object as per our earthbound frame, that is as per the. I will pose you many more problems. 2 particles approach each other with a speed of 0.9 C. So what is their relative speed? A rocket is sent with a velocity 0.9 C. और ये रॉकेट जो है हम इसी रॉकेट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक लाइट पल्स भी सेंड करते हैं, तो आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट पल्स रिलेटिव टू द रॉकेट। 2 light photons approach each other, so there is one light photon which is moving with speed C, there is another light photon and it is moving with speed C and they are approaching each other, तो आपको बताना है कि इनकी relative velocity, so U prime आपको निकालना है इस प्रॉब्लम में। A spaceship moving away from Earth with velocity 0.6 times C, ये एक रॉकेट फायर करता है और रॉकेट की वेलोसिटी तो है 0.7 टाइम्स C, बट इट इज रिलेटिव टू रॉकेट। तो आपको इवैल्यूएट करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ। A spaceship moving away from Earth with velocity 0.6 times C fires a rocket. तो
स्पेसशिप की रॉकेट जो वेलोसिटी है दैट इज 0.6 टाइम्स सी, जो ये रॉकेट फायर करता है दैट इज 0.7 टाइम्स सी, बट इट फायर्स इट टुवर्ड्स रॉकेट, यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको डिटरमाइन करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ।